Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to lecture number 8, and this lecture is about value engineering. This is very important concept and this is one which is been ignored in Pakistan construction industry, project management industry, social industry and manufacturing industry for a very long time. People are using a value engineering concept in their relevant field, but the acceptance of that concept is not that prevalent. But before we talk in detail about that, we will have the summary of our previous lecture. The other day we were talking about the definition of stakeholders, and different people have different definitions of stakeholder. Even the standards, they are actually elaborating the definition over the time. So we had given this example of PMBOK, where PMBOK had different definition in earlier version, but now they have improved it. And then we had the definition from ADB, African Development Bank, and then we had talked about stakeholder management, the definition and the framework, and processes. There are 4 processes for project stakeholder management as far as PMBOK is concerned. Many organizations and other body of knowledge may have their own set of processes and steps to manage project stakeholders. But before we actually manage the stakeholders, we should have the context of the project with us. The context of project dictates the level of effort we have to put into stakeholder management. Yes, that is very much there. If you are doing a simple project, still you have to manage the stakeholders, even though you are having only few number of stakeholders. But the importance of stakeholder management, gets more of concern for the project manager when it comes to complex project or large project. The number of stakeholders is huge, the networking is huge, and they have very good number of options available with them. So understanding the context of project, the number of stakeholders, the complexity of the project and other parameters, you then go and identify the project stakeholders. And we had discussed about how to identify the stakeholders, different tools we had discussed, and then their characteristics like power, influence, and their network was actually undertaken in project stakeholder analysis. Then we had talked about how to actually engaging them, how to bring the project to a success by doing proper stakeholder engagement. And then we had discussed engagement framework, and there are classification of the different classifications available for the stakeholders as far as engagement framework is concerned. And we had talked about 5 of them, like neutral, sportive, and opposing the project, and similarly. Now we will start this value engineering lecture. In 47, the GEC, General Electricity Company of the USA, was manufacturing turbo superchargers and armaments of B-24. This is a Bombardier plane, and they were asked to increase the production of turbo superchargers of that plane from 50 per week to 1,000 per week. At the same time, there was an increase in armament part production of different other instruments. However, suppliers were overloaded and they were forced to say no, because all the factories were running at maximum production, and they were not able to actually have material resources available from the market, so they were forced to say no to an increase. Then Mr. Lawrence D. Miles, a purchase engineer of the GEC, was assigned the task which was defined as finding a more effective way to improve a product value. While working on his assignment, Miles found that there were some substitutes. Now this word is a buzzword and very important, which performed equal or even better than the existing ones. So one part of
the product that is performing something, but there is something available which can actually replaces that part and performs more than the existing one. So this is about substituting the parts. He continuously asked himself, if I cannot get the product, I've got to get the function. So it is not about the product, it is about getting the function. So how can you provide the same function by using some machine or labor or materials that you can get? So if you're not getting the required materials or required resources or required machine, so you have to do something else. The example is very much there. Like if you have to construct your home, and then you are actually making these excavations for your house, and then you had planned that you will hire an excavator, the machine with this claw and that digs up the stuff. But then you found out that there is a big project being carried out in the locality, and all the excavator machines are occupied by that big contractor, and you are left with no other option. Now there are two options available. First one is you actually hire some other resource, or you just simply sit on it and wait कि वो जो ठेकेदार है, ये जो वो बड़ी कंपनी है, वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर ले. So which option you will adopt? Okay, if your answer is कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, तो फिर उसका मतलब ये है कि आप टाइम जो है वो स्पेंड कर देंगे थोड़ा सा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो मार्केट के प्राइसेस हैं जो मटेरियल्स की या दूसरी चीज़ों की, वो हो सकता है कि एस्केलेट कर जाएं, और फिर आपकी जो पूरी की पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाए. सो इन दैट केस यू विल थिंक एंड यू विल थिंक कि हम क्या कर सकते हैं. तो फिर आपने सोचा कि हम इस तरह करते हैं कि लेबर जो है उससे काम करवा लेते हैं, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा. जहां उसी मशीन ने ये सारा काम 2 दिन में कर देना था, लेबर हो सकता है कि यही काम 10 दिन में करे, लेकिन ये होगा कि हमारा काम जो है वो टाइम के ऊपर हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर द सब्स्टिट्यूशन. This functional approach to the problem was very helpful. If I'm not getting the product, I should have got the function. So during the war time, this approach was used, and 47 Miles requested the GEC to establish a research cell in GEC purchasing department to study this new initiative. The original concept was christened as value analysis. In 1954, the Bureau of Ships within the Department of Defense adopted this technique to improve their cost in manufacturing ships. They changed the name of this technique from value analysis to value engineering. Subsequently, the definition was regularized by pronouncing that value analysis is a term used when this technique is used for an existing product or operation, and the term value engineering is used when it is applied at the design stage or project. So then they actually have done a good job in USA. They have some rules and regulation and some legislation through their legislative bodies, and that states that कि अगर आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप स्टेट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप ऐसे मीन्स ढूंढते हैं जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आपको उसका बेनिफिट होगा. सिनेरियो ये होता है कि अगर आप 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट उसकी एक परसेंटेज होती है. सो लाइक अगर आप 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 10% होगा, तो आप प्रॉफिट बन गया 10 रुपये. अगर आप 1 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं तो अब आपका 10% के हिसाब से अब आपका प्रॉफिट बन गया 10 लाख रुपए. और अगर आप 1 अरब रुपए का काम कर रहे हैं और 10% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बन गया 10 करोड़ रुपए. सो
The thing is, you are actually doing from this 10 rupees profit margin to this 10 लाख 1 मिलियन और फिर 10 करोड़ 100 मिलियन, यानी कि 10 रुपए से लेकर के 100 मिलियन का प्रॉफिट. जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो प्रॉफिट्स को ज्यादा वैल्यू देती हैं, वो क्यों ऐसा कुछ भी करेंगे जिससे कोई कॉस्ट कम हो. तो इस चीज को करने के लिए व्हाट दे हैव डन इज कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा इनिशिएटिव करेगा और प्रपोजल के अंदर से कुछ ऐसा निकाल कर लेके आएगा जिससे उसकी कॉस्ट कम की जा सकती है, थ्रू इनिशिएटिव, थ्रू क्रिएटिविटी, एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस. सो उसका जितना भी पार्ट, लाइक अगर आपका 10 करोड़ वाला प्रोजेक्ट था, 1 करोड़ वाला प्रोजेक्ट था और उसके अंदर आपका प्रॉफिट था 10 लाख रुपए, और अब आपने कुछ वैल्यू इंजीनियरिंग की है, टेक्निक्स यूज की हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं. तो अब आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 90 लाख रुपए. अब आपका प्रॉफिट रह जाएगा 9 लाख रुपए. तो ये तो उल्टा नुकसान है. ठेकेदार कभी नहीं चाहेगा, कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो या उसका प्रॉफिट कम हो. तो उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह करें कि जो आपने 10 लाख रुपया अपनी क्रिएटिविटी से आइडेंटिफाई किया कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी एंड अदर स्टफ, आप जो 10 लाख है उसका एक पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा. यानी कि अगर वो लिखा होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट में 30-70, सो 70% विल बी विद स्टेट एंड 30% विल बी द कॉन्ट्रैक्टर. नाउ सी दिस सिनेरियो, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, आपका प्रॉफिट था 10 लाख रुपए. अब आप ने उसको वैल्यू इंजीनियरिंग की और उसके ऊपर अब आप उसकी कॉस्ट रहेगी 90 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट रह गया 9 लाख रुपए. जो 10 लाख रुपए की सेविंग आई उसके अंदर से 3 लाख रुपए आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और 7 लाख रुपया स्टेट की बचत होगी. अब जो आपका 3 लाख रुपए की बचत हुई है और 9 लाख पहले प्रॉफिट था, 3 और 9 12 लाख. In that case, basically they have given a very good initiative and very good incentive for the contractor team कि वो आइडेंटिफाई करे कि कैसे हमने इसको कॉस्ट को. इन दैट सिनेरियो आपने काम अब कम का किया और प्रॉफिट आपका ज्यादा हो गया. अगर यही सूरत हाल आप करें 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो देन यू विल हैव दिस जो हम सिनेरियो बात कर रहे थे कि 1 करोड़ के पीछे आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, आपने वही 90 करोड़ में किया और उसके ऊपर आपको जो 30% के हिसाब से अगर मिलेंगे या 40%, वट एवर द परसेंटेज हैज बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आपका प्रॉफिट जो है वो 12 करोड़ रुपए हो जाएगा. सी, तो इस तरह उन्होंने अपने लेजिस्लेशन के थ्रू जो भी उनका बॉडीज हैं उन्होंने इसको अपने कानून का हिस्सा बना दिया है और वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ देम के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है ये चीज. सो इन दिस फैशन दे हैव एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड दिस कंसेप्ट. सो दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग. नाउ value engineering concept or value analysis concept, and we had talked value analysis is when we are having this production or operation thing, and or we are talking about existing system, and when we come to projects it is about value engineering. Well, this is a concept in human being that costs are necessary. You cannot go and have stuff without spending the cost. So when आप एक जगह एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कोई काम कर लिया, एक प्रोजेक्ट आपने बड़ा सक्सेसफुली काम कर लिया, विद इन बजट था, विद इन कॉस्ट था, और उसके ऊपर आपने 100 मिलियन रुपीस खर्च कर दी. अब अगला जो प्रोजेक्ट आएगा सेम नेचर सारा कुछ, तो आपके जहन में एक फितरी तौर पे बात आ जाएगी कि यहाँ भी 100 मिलियन ही कम से कम खर्च होगा. हो सकता है कि वहां आपने जो मशीन ली हो वो 100 मिलियन के अंदर से 30 मिलियन की तो वो मशीन्स हों जो आपने प्रोक्योर की थी या परचेज की थी. अब वो मशीन उस प्रोजेक्ट पे यूज हो चुकी हैं, वो मशीन अब आप यहाँ इस प्रोजेक्ट पे जब यूज करेंगे तो वो 30 मिलियन उस कॉस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए है, बल्कि आप वो जो कॉस्ट है रिड्यूस होनी चाहिए. So, but this is human beings' mind. They consider cost as necessary until
Now this is very important until they actually forced to think about some other alternatives. Like we were talking about 100 million is the baseline, very fine. But when we go into detail, okay, we had this 30 million procurement of the machinery, and this machinery can be used in new project. Now this cost has been identified as unnecessary at this time. So when they know the means to keep the performance factors without spending the money, then the costs become unnecessary. So over there, this cost has become unnecessary. In that example of machines, 30 million has become unnecessary. So and this is very important. And unnecessary costs won't go anywhere. They will remain there. They are part of a product, service, or system, and those were a part of a product, system, and a project or result, and they will keep be a part of the product system until and unless you actually go and identify and try to eliminate them. So this is the concept of value engineering. And value engineering is the answer to identify all those unnecessary costs, and hence giving you the options to eliminate those. So the definition of value engineering is given in this slide, and value engineering is defined as systematic application of recognized techniques by multidisciplinary teams, which identifies the functions of a product, process, service, or system, establishes a worth for the functions, generates alternatives through the use of creative thinking, and provides the needed functions reliably at the lowest overall cost. So there is an example given over there. You can have this watch, और जो उसका ऊपर वाला कवर है, आप ये देख सकते हैं कि उसके उन्होंने 6 डिफरेंट ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए. फंक्शन ऑफ द कवर इज कि वो आपकी घड़ी अच्छी दिखे. अब वो मेटल का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई सिंथेटिक मटेरियल जो भी है वो उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं. सो कंपनी के जो टीम है उसने क्या किया कि उन्होंने 6 डिफरेंट मॉडल्स किए हैं तैयार, और उसके बाद उन्होंने फंक्शन जो है वो देना है और रिलायबिलिटी के साथ देना है, और विद ओवरऑल लेसर कॉस्ट उन्होंने देना है. सो दीज आर 6 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टू पिक. जो भी आपकी एग्जिस्टिंग घड़ी है उसका जो ऊपर वाला आप जो है फेशिया है उसको चेंज कर सकते हैं. इसी तरह बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है मोबाइल फोन की. अगर तो आप सिर्फ मोबाइल फोन को कॉल करने के लिए सुनते हैं तो आपका जो एक बड़ा अच्छा ब्लैकबेरी है या आईफोन है, आप उससे भी बात कर सकते हैं. और अगर आपका एक मोबाइल है जो कि किसी लो प्राइस मोबाइल है और उससे भी आप बात सुन सकते हैं, तो दोनों फंक्शन सेम है. हाँ, जब आप बात करते हैं कि उसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जिसकी कॉस्ट ज्यादा है आपके फंक्शंस ज्यादा हैं, और जो दूसरे वाला है उस पर आप सिर्फ कॉल ही सुन सकते हैं. सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका बेसिक फंक्शन क्या है, आपका पर्पस क्या है. अगर तो आप अपने पर्पस के ऊपर रहते हैं और आप कहते हैं जी हमें सिर्फ यही एक मखसूस पर्पस चाहिए और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, देन आपको सस्ते वाला मोबाइल ही लेना चाहिए. So the 7 most significant factors responsible for saving actions is given in this diagram, and over the time we had this study that advance in technology brings 23% of the savings. One of the example जो कि बड़ी हम लोग अक्सर देते हैं कि अगर आप एक रोड बना रहे हैं तो रोड के अंदर एक मशीन यूज की जाती है, उसको कहते हैं ग्रेडर. अगर आपने ग्रेडर नहीं देखा तो आप गूगल इमेज में जाके एक उसका ग्लिम्स देख सकते हैं कि मैं किस मशीन के ऊपर बात कर रहा हूं, ताकि आप अच्छा विजुलाइज कर सके इस एग्जांपल को. सो दिस ग्रेडर इज मशीन जिसके अंदर एक बड़ा सा ब्लेड होता है, नीचे उसके ब्लेड लगा होता है, और जब वो रन करती है तो वो पूरी सरफेस को एक बड़ी अच्छी स्मूथ सरफेस
جو ہے وہ دے دیتی ہے. جب آپ ایک روڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو سرویئر ہے جس کے ساتھ 2 ہیلپر ہوتے ہیں اور ایک اسسٹنٹ سرویئر ہوتا ہے اور آپ 300 میٹر کی ایک ریچ یا 300 میٹر کی ایک روڈ سیکشن بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو سرویئر ہے وہ آپ کو لیولز لگاتا ہے کہ کس لیول پہ جا کے ہم نے یہ گریڈنگ کرنی ہے، یا مشین نے کس لیول پہ جا کے ایک بلیڈ کے ساتھ اسے سموتھ کر دینا سارا. وہ لیول لگا کے صبح اگر کام شروع کرتے ہیں تو وہ 2 3 4 گھنٹے کے اندر وہ لیول لگاتا ہے 12-1 بجے. اس کے بعد جو مٹیریل آ چکا ہوتا ہے وہ مٹیریل اس کے بعد وہاں پھینکا جانا شروع کیا جاتا ہے اور گریڈر اس کو پھر گریڈ کرنا شروع کرتا. اور جب وہ گریڈر اس کو گریڈ کر رہا ہوتا ہے تو سرویئر جو ہے اس کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بلیڈ نیچے کرو، بلیڈ اوپر کرو، جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے مشین کے اندر. تو اس طرح شام تک یہ جو ہے ایک گریڈر ہے، اس کے اوپر ایک اس کا ہیلپر ہے، اور اس طرح سرویئر اور اس کی ٹیم میں نے بتا دیا. تو یہ لوگ اس ساری سرفس کو ایک بڑا اچھا گریڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ لوگ 6 لوگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ اور لوگ بھی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی گریڈنگ ختم ہوتی ہے تو جو رولر والے ہیں، جو 2 رولر ہیں اگر آپ کے اور 2 ہی ان کے اوپر آپریٹر ہیں، وہ اس کو رولر کبھی آپ گوگل امیج میں جا کے ویژولائز کر سکتے ہیں کہ رولر کیا ہوتا ہے. اس کے بڑا سا ڈرم لگا ہوتا ہے جس کو عام زبان میں بلڈوزر بھی بولتے ہیں، اور جب وہ رول کرتا ہے تو اس کے بعد پوری کی پوری روڈ بڑی اچھی کمپیکٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ایک واٹر بوزر والا ہوتا ہے جس کے پاس پانی ہوتا ہے، وہ پانی سپرنکل کرتا ہے تھرو آؤٹ دا پیومنٹ تاکہ آپ کی جو کمپیکشن ہے وہ اچھی ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فنیشنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کھڑے ہوتے ہیں. ارتھ ورک سپروائزر ہوتا ہے اور اس کی ٹیم ہوتی ہے. لیبارٹری والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ٹیکنیکل ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سرویئر لیولز لگائے گا اور اس کے بعد گریڈر اس پہ کام کرے گا اور پھر باقی لوگ کام کریں گے. اب آپ نے ایک ایسا گریڈر لے لیا جو کہ جس میں سارا سسٹم جو ہے آٹومیٹک اس کے اندر ہے، اس میں آٹومیٹک لیولز وہ خود کرتا ہے اور اس کا بلیڈ آٹومیٹکلی اوپر نیچے خود سے ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسی مشین انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ آپ کس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں؟ آپ ایک سرویئر کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک سرویئر ہیلپر کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک سرویئر اسسٹنٹ کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ابو آل یہ سارا کام جو صبح سے لے کے 4 بجے تک صرف آپ کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہی کام اسٹریٹ اوے آپ کا سٹارٹ ہو سکتا ہے صبح 8 بجے اور کمپلیٹ ہو سکتا ہے ود ان a time of 1 hour. Now you are saving the time of so many people. You are actually eliminating so many unnecessary things. So advance in technology actually is bringing a lot of saving in road sector. This was just one example. دین ڈیزائن ڈیفیشنسیز اگر آپ ان کو امپروو کر لیں تو 4% تک کا یہ پرابلم ہوتا ہے. ری ورک کرنا یا ری ڈو کام کو کرنا، دیٹ از ویری مچ از پریویلنٹ ان دس انڈسٹری. پاکستان کے اندر جو بھی ڈیزائنز ہوں یا جو بھی آپ کے پرپوزلز ہوں، اور کافی ساری جگہوں پہ آپ پراپرلی اس کو نہیں دیکھ پاتے، پلان نہیں کر پاتے، اور پھر آپ کو وہ سارا کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے. جو بنایا ہوتا ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے کرنا ہوتا ہے. سو یہ جو پرابلمز ہیں آپ کے اگر آپ ایلیمینیٹ کر لیں تو 4% تک کی آپ کی سیونگ. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی فیڈ بیک فرام دا یوزرز. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اسپیشلی سوشل سیکٹر پروجیکٹس کے اندر جہاں ریکوائرمنٹس کلیکشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کس ٹارگٹ ایریا کو کر رہے ہیں اور آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کس طرح آپ ایکچولی ان کو کولیکٹ کر رہے ہیں. سو ریکوائرمنٹس کو کولیکٹ کرنا اور ان کو پھر اسکوپ میں ٹرانسفر کرنا، ٹرانسفارم کرنا اور پھر اس سے اس کو بیس لائن بنانا، دس از ویری مچ آف گرے ایریا ایز فار ایز سوشل پروجیکٹس آر کنسرنڈ. سو اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو یوزرز ہیں ان سے پوچھیں جی آپ کو کیا چیز چاہیے ہے، اور پھر آپ کچھ پروٹوٹائپنگ کر لیں یا کچھ اس طرح کا کر لیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ یس دس از واٹ وی ایکچولی وانٹ. تو اس سے آپ کو
کافی زیادہ سیونگ ہوگی. ریزن یہ ہے کہ آپ اپنا پروجیکٹ آئسولیشن میں کرتے رہتے ہیں, پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے آپ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چاہیے نہیں تھا, یہ تو ہم نے تو نہیں یہ ڈیمانڈ کیا تھا آپ سے, ہم نے تو کچھ اور چیز ڈیمانڈ کی تھی, اور پھر آپ کو کچھ کمپوننٹس چینج کرنے پڑتے ہیں, کچھ ماڈیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے بیسیکلی آپ کو کافی زیادہ پھر ریورک کرواتی ہے. اس چیز کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. یوزر نیڈز کی ریکوائرمنٹ بدل گئی. آپ اپنا پروجیکٹ کر رہے تھے, آپ اپنا کام کر رہے تھے, اور ان مین ٹائم جو آپ کا یوزر تھا اس کی ریکوائرمنٹ بدل گئی یا اس کی نیڈ بدل گئی. اب آپ اگر تو ابرپٹ ہیں اس ساری چین کے ساتھ, جیسے ہی آپ سسٹم اس طرح کا کرتے ہیں, اپنا پلاننگ اس طرح کی کرتے ہیں, یا پروجیکٹ کو اس طرح مینج کرتے ہیں کہ اس میں ایجلٹی کا کنسیپٹ آ جاتا ہے, اور پھر آپ اس پہ 12% تک کی جو ہے وہ سیونگ کر سکتے ہیں. سو ری ڈیزائن کاسٹ کے اوپر ہم نے بات کی تھی. ری ڈیزائننگ کاسٹ جو ہے وہ 15% تک جو ہے وہ بیسیکلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے نیسیسری کاسٹ کے اندر. اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ اینڈ دیٹ از کوشچننگ اسپیکس. آپ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ جو اسپیسیفکیشنز ہیں یہ کیوں ہیں. obviously آپ جو چیز ایک بنا رہے ہیں وہ ایک کام مخصوص فنکشن کے لیے بنا رہے ہیں. اگر وہی فنکشن آپ کو دوسری چیز سے مل سکتا ہے تو یہی ہم کیوں اسپیسیفکیشن فالو کریں. تو مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ایک فین بنا رہے ہیں اور فین کا فنکشن ہے ہوا دینا, اور اگر آپ کا فین جو ہے وہ لوہے کی شیٹ کا بنے, اچھے پائیدار سٹیل کا, یا بڑا ہی سالڈ اور بڑا ہی ٹیسٹڈ قسم کا کوئی پولیمر یوز کر کے یا کوئی اس طرح کا پلاسٹک یوز کر کے اگر اس کے جو ہیں پر ہیں وہ اس سے بنائے گئے ہوں اور پلاسٹک کا وہ فین ہو, تو دونوں ہی سیم فنکشن کریں گے, دونوں ہی ہوا دینے کا فنکشن کریں گے, اور دونوں میں لیکن جو انیشل کاسٹ آئے گی جو کہ ایک لوہے کا یا سٹیل کا یا جو اس طرح کا فین ہوگا اس کی, اور جو آپ کا فین ہوگا پلاسٹک کا یا اس طرح کے سیم مٹیریل کا, تو جو انیشل کاسٹ آئے گی وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ والے میں کم ہو. اب آپ کی اسپیسیفکیشن یہ کہتی ہیں کہ جی اسٹیل اس کا یہ گریڈ, اس کا یہ تھکنس, اس کی یہ گیجز, یہ ساری چیزیں اب ڈیفائنڈ ہیں. اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نا یو ایکچولی گو اینڈ کوشچن کہ جناب آپ کو تو یہ والا فنکشن چاہیے ہے, آپ کو تو یہ جو کمپوننٹ ہے یہ چیز پرفارم کرے گا, اور اگر یہ پرفارم آپ کا کر سکتا ہے تو پھر آپ کی یہ ساری اسپیسیفکیشن کی ہی ضرورت ہی کیوں ہے. سو یو کیپ کوشچننگ دا اسپیسیفکیشن اینڈ بائی دیٹ یو ایکچولی آر سیونگ 18%. اینڈ دین ایکسیسو کاسٹ, یہ کاسٹ ایسی ہوتی ہیں جو جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم نے پچھلا پروجیکٹ کیا تھا اس کے اندر یہ کاسٹ لگی تھی تو یہ کاسٹ ہمیں ابھی بھی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کے اندر آپ 22% تک کی جو ہے وہ سیونگ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک اسٹڈی کے تھرو جو موسٹ سگنیفیکنٹ آپ کی کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے جن ایریاز کے اندر, وہ یہ 7 ایریاز ہیں. Then this is an example of a very good example of construction industry, and you must have heard that this road is being built through public sector development program, and the cost of this project is 10 billion or 20 billion, and you've amazed, this is so huge cost, but remember, this is only the 15% of the life cycle cost. Now, what is life cycle cost? We are going to talk on that. 15% ہوتی ہے صرف جو آپ خرچ کرتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ مینٹیننس کی کاسٹ کتنی ہے 25%. So, if you are increasing the construction cost, مینٹیننس کاسٹ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا آپ انیشل خرچ کر سکتے ہیں اور کتنا پھر مینٹیننس کی کاسٹ اکارڈنگلی آپ کی کم یا زیادہ ہوگی. اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ آپ نے روڈز دیکھی ہوں گی, کچھ سیمنٹ کی روڈ بنتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ بچومن کی روڈ بنتی ہیں. جو بچومن کی روڈ ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فلیکسیبل پیومنٹ میجورٹی آف کیسز, اور جو آپ کی سیمنٹ سے بنتی ہیں ان کو کہتے ہیں ریجڈ پیومنٹ. جو فلیکسیبل پیومنٹ ہے اس کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے ان کمپیرزن ٹو ریجڈ پیومنٹ, لیکن اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ریجڈ پیومنٹ. پھر جو فلیکسیبل پیومنٹ بنتی ہے اس کو صرف 10 سال کے لیے بنایا جاتا ہے, اور جو ریجڈ پیومنٹ بناتے ہیں اس کو 40 ایئرز کے لیے بنایا جاتا ہے. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے
फ्लेक्सिबल पेवमेंट की वो बेशक थोड़ी है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और रिजिड की अगर शुरू वाली कॉस्ट आपकी ज्यादा है लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत थोड़ी है। तो अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस बेस पे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जी रिजिड पेमेंट बनाना चाहिए। तो अगर तो आप ये कह रहे हैं या आपका जवाब ये है कि जी हमें रिजिड पेमेंट करनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशन, सो आपका आंसर अभी ठीक नहीं है। अभी हम और चीजें डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 35% है, देन 40% है, और फिर 10% जो है वो आपका ऑपरेशन कॉस्ट है। वो चाहे आप एक तरह की रोड बनाएं या दूसरी तरह की रोड बनाएं, ऑपरेशन कॉस्ट विल मोर और लेस रिमेन सेम। 50% of the total cost is about road user vehicle operating cost. So फिर दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अभी हमारा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, जो सबसे ज्यादा हमें रोड यूजर कॉस्ट बियर करनी पड़ती है इकोनॉमी को, नेशन को, कंट्री को, और रोड यूजर कॉस्ट के अंदर क्या आ जाता है? फ्यूल कंजम्पशंस, ऑयल कंजम्पशन, टायर वीयर एंड टियर, पार्ट्स रिप्लेसमेंट, व्हीकल डेप्रिसिएशन, ट्रैवल टाइम्स, एक्सीडेंट्स। सो नाउ अभी हम यही एग्जांपल लेते हैं रिजिड पेवमेंट की और फ्लेक्सिबल पेवमेंट की। जो रिजिड पेवमेंट होती है उसके अंदर जो आपका फ्यूल कंजम्पशन है, जो ऑयल कंजम्पशन है, और जो टायर वियर एंड टियर है, जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट है, जो डेप्रिसिएशन है व्हीकल की, वो सारी की सारी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट। क्योंकि जब आप सीमेंट वाली सड़क के ऊपर चल रहे होते तो आपकी गाड़ी ज्यादा बम्पी फील करती है और आपकी फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की जो नीड्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो आपकी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में दैट इज मोर स्मूथ और उस पर रफनेस कम होने की वजह से, अब अगर हम देखें कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है फ्लेक्सिबल की, मेंटेनेंस ज्यादा है, और रोड यूजर कॉस्ट भी काफी कम है। और रिजिड की अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है, रोड यूजर कॉस्ट भी ज्यादा है, सिर्फ मेंटेनेंस का एक कंपोनेंट है जो कम है। तो हम अगर इसका थोड़ा सा मैथ कर लें और इसका एनालिसिस कर लें हम कि पूरी लाइफ के अंदर दोनों तरह की पेवमेंट्स की क्या कॉस्ट आएगी जो इकोनॉमी को बियर करनी पड़ेगी, देन वी विल हैव अ वेरी गुड डिसीजन कि हमें कौन सी रोड्स बनानी होंगी। सिर्फ इस बात के ऊपर सिर्फ एक कंपोनेंट को लेकर के आप नहीं फैसला कर सकते कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा सिस्टम बनाना है। आपको सारे ही उसके प्रोडक्ट के पार्ट्स लेकर के फिर डिसीजन करना होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रोड यूजर कॉस्ट एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऑफ road sector. Now we will talk about the value, the concept of value. Value is a word whose meaning is different for different people, and this is as old as civilization. Aristotle in 365 BC had mentioned about 7 types of value, and the list is given over there. He said the values are of religious, political, social, aesthetic, ethical, economical, and judicial. So these are 7 values which are prevailing in the society. So in today's economic environment, value engineering lays stress on economic values. So if we go to previous slide, over there are 7 of them. And religious values are very important and very respectable, and then political values. Now these are different segments of the society, you know. Religious segment is something different or separate, and political people should be different and separate, and then social sector is quite different thing, and then aesthetics or art and culture and stuff like that, that is a different aspect of the society. Ethics and ethical framework, that is another part of the society. Economics, now economic part is a different part of the society, and then judicial. So you can say that all the dimensions, there is nothing different and very separate from each other. Like if you talk about the judicial, so judicial value should be prevalent while you do economic decisions. The economic decisions should be judicious,
and ethical and within the framework of the religion, and should be politically accepted and socially accepted, and should take care of the aesthetics part. So all these dimensions interact with each other, and there becomes some part of each other becomes common. But still they do have some distinct characteristics, और उसको observe करना चाहिए है, करना होता है, और हम करते हैं, चाहे हम इसको तस्लीम करें या ना करें. तो ये वैल्यूज जो हैं ये सारी की सारी आपके इंटरेक्ट करती हैं. आज जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू इंजीनियरिंग की, तो हमारा जो एम्फसाइज है वो है इकोनॉमिक वैल्यूज के ऊपर. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज आर स्टीम वैल्यू. अब हम उसका फर्दर एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद उसके 4 पार्ट्स हैं: स्टीम वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू. नाउ व्हाट इज the meaning of the constituent and their definition? Okay, exchange value. Exchange value is the value in the product, process, service, system, result, project, which can help to trade with some other things. More the exchange value, more will it be lucrative for the customer. So the example is gold. So if you are having this gold thing available with you, so this has some value in it. कि लोग उसको मतलब जब भी आप एक 10 ग्राम का गोल्ड का अगर आप ब्रिक लेके जाते हैं, तो लोग उसको परचेज करते हैं, और उसकी वो एक एक्सचेंज वैल्यू प्रिवेल करते हैं. इसी तरह एक आपके पास करेंसी का कंसेप्ट है. आप नोट देते हैं, और उसके ऊपर आपको एक जो भी आप दूसरी कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसके अंदर आप ले सकते हैं. इसी तरह दूसरी कमोडिटीज हैं. सो एक्सचेंज वैल्यू इज अबाउट द ल्यूक्रेशन ऑफ द थिंग फॉर द कस्टमर. सो अदर डेफिनेशन इज स्टीम वैल्यू, and that steam value can be defined as the part of the product, process, service or system which will force the person to own them. Steam values are the want and desire of the customers. So the painting you are holding, or the Picasso's work. So अब आपके लिए शायद उसकी जो lucrative value है, या exchange value शायद उतनी ज्यादा ना हो. बुद्धा का एक मुजस्मा हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी के लिए तो बड़ा रिस्पेक्टेबल हो, और दूसरी कम्युनिटी के लिए वो सिर्फ एक पत्थर का हिस्सा हो, और एक तीसरे साहब उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो कि जी इसकी एक वैल्यू है, ये पुराना है, ये 4000 साल पुराना है, और स्टफ लाइक दैट. सो स्टीम वैल्यू एक्चुअली फोर्सेस यू टू कीप that stuff with you. So this is about having want and desire of the customer. Then there is use value. So use value of the product, process, service or system is that value for which the thing has been created. Everything is being created to fulfill certain purpose. It should include the need of the customer. So if you are buying this washing machine, और वो कपड़े धोने के लिए आपने बाय की थी, अगर वो कपड़े नहीं धोती है तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, आप उसको नहीं रखना चाहते हैं. इसी तरह आपने एक घड़ी ली, और घड़ी आप इसलिए ले रहे थे कि उसके अंदर आप टाइम देख सकें, और वो चलना बंद हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको उतार के या तो रिपेयर करवाएंगे या उसको साइड पे रख देंगे. इसी तरह जो आप गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, तो गाड़ी के जो बाकी काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपको वो ट्रेवल करती है. एक ऐसी गाड़ी जो कि बड़ी ही अच्छे मॉडल की है और बड़े ही अच्छी कंपनी की है, और वो आपके घर में खड़ी है, लेकिन वो आपको कहीं लेकर के नहीं जा सकती, उसका इंजन काम नहीं करता या कोई और दूसरा मसला है, तो वो आपकी यूज वैल्यू कुछ भी डिपिक्ट नहीं कर रही. एंड देन देयर इज अ फोर्थ वैल्यू, दैट इज कॉस्ट वैल्यू. Cost value is the cost of the product, service, system. It is a total cost which is known as life cycle cost or the cradle to grave cost. Now this life cycle concept is again there, and so we talk about project and product life cycle and life cycle costing. So what is product life cycle? We have talked about, and this slide shows over there the project life cycle,
and operational life cycle and disposal. So product life cycle, when it comes to the first part is project life cycle. So let's say our project is having these phases like pre-project phase, then conceptual phase, and then we design, and then we implement the design, and then we hand over our project to operations. And in operation life cycle, we keep operating or using that product of the project, and we keep maintaining. Now, the maintenance is quite different than the project, but you know, maintenance can be actually carried out as a separate project, as we have given this example in relevant sessions. So maintenance can be conceived, designed, implemented, and you know, handed over. So you keep maintaining, but within the operations life cycle, you have come across that you can actually upgrade the system, and upgradation is then taken up in the same fashion like taking up a project, and then after upgradation, then you keep maintaining, and there comes a point then operation life of the product is dissipated or gone, then you actually dispose of the stuff. So disposal can be taken up as a separate project as well. So product life cycle comprises of project life cycle, operation life cycle, and disposal. So this is the concept of the project and product life cycle. And now we are considering this diagram in the context of costing. So what is life cycle costing? It is not about the cost of the project only or pre-project phase, you know, but you actually take care of the cost of the whole of operation as well and disposal as well. So people usually when they take up the project, they only take the project as for as cost is concerned, for the sake of estimation or costing, and they only consider the projects. Now that is a bad thing. But in organizations, you know, life cycle costing concept is very much prevalent, and when it comes to the feasibility of the project, there is also a feasibility of the product as well. So project and product feasibility studies are carried out before you actually go and start the project. So as part of that feasibility study, the costing thing is carried out. So economic analysis is done or financial analysis is done. This costing includes the cost of conceiving the project, the cost of actually carrying out the project, closing the project, the cost of operations, including all the maintenance, upgradation, and then disposal. So this is how actually life cycle costing is carried out. So from you can say that कि गोद से लेकर के कवर तक की जो cost है, that is life cycle cost. So value we were talking about, and then we had talked about different types of value: exchange value, esteem value, use value, cost value. Then life cycle we had talked about the cost bit. The life cycle concept we have discussed. Now mathematical expression of value. What is the mathematical expression of value? Value may be expressed mathematically. The elements of the mathematical expression are performance and cost. It can be stated as given over there. As you can see, the value is value index of any product or system may be expressed as the function or performance of that equipment or machine or system, and divided by the total cost. Now the cost means life cycle cost, and function, you can you really actually quantify the function? Or performance. Here comes the concept of worth. So we will talk about how to actually have the worth and what is the difference between worth and cost. So the expression on the last slide is in the form of ratio and can be improved as per the modification stated as follow. So you have this value thing and you want to improve the value of any product. आपके पास क्या options हैं? एक option तो ये है कि आप function को improve कर दें.
अगर हम दोबारा देखें, अगर हम इस फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और कॉस्ट आपकी सेम रहती है तो आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा यह है कि आप जो फंक्शन है उसको सेम रखें और कॉस्ट को कम कर दें। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप फंक्शन को इंक्रीज करें ज्यादा रेट के साथ और कॉस्ट भी ऑब्वियसली थोड़ी सी इंक्रीज होगी लेकिन कम रेट के साथ हो, ताकि वो जो डिफरेंस है उसका वो ज्यादा रहे। चौथी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप परफॉर्मेंस को भी कम कर लें और कॉस्ट को ज्यादा रेट से कम करें। और इसके अलावा हमारी ऑप्शन ये हो सकती है ओवर देयर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन इज इम्प्रूव्ड एंड कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूसेस। एक ये हो सकता है कि वो हम परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं और कॉस्ट ऑन द अदर एंड हम कम कर रहे हैं। तो ये 5 ऑप्शंस हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह के हम बात करें कि 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस स्लाइड के ऊपर अगर हम चले जाएं, कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि हमें नहीं डिजायर्ड इन वैल्यू इंजीनियरिंग। सो the performance or function is improved but the cost remains the same. The performance or function remains the same but the cost decreases. The performance or function is improving and cost also reducing. The performance of function improves at a greater rate than the cost increase, and the performance of function decreases and the cost also decreases. So the 5th option is decreasing the function, and we do not want that. While the value engineering concept is to replace some element of the same function. So this option and this 5th option of reducing the function is not aligned with the concept of value engineering. So all the mentioned expression are quite okay, but for from the value engineering concept, the 5th expression is not acceptable. This is because in any way the performance of function cannot be compromised. In other words, the item cannot be made less reliable or of low quality. There is debate on quality and the grade, and what is the difference between quality and grade. So meeting the standards and requirements of the customer is quality, whereas grade may be of inferior and superior nature. So अगर आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं जिसकी स्पेसिफिकेशन ही ये कहती हैं कि आपकी वो जो बैटरी है वो सिर्फ 1 घंटा चलेगी, और आपके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी यही है कि मुझे 1 घंटा बैटरी सिर्फ चाहिए है, तो अब ये मोबाइल बन गया। अब अगर क्वालिटी की बात की जाए तो ये अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट कर रहा है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है। ऑन द अदर एंड आपका दूसरा एक कस्टमर है, वो कहते हैं जी मुझे एक ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी आप 7 दिन तक चला सकें और 7 दिन तक वो मुसलसल चार्जिंग की ज़रूरत ना पड़े और मुसलसल चलता रहे, और यही आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं और यही आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ये मोबाइल बनाते हैं और इसकी बैटरी डिज़ाइन करते हैं जो कि 7 दिन मुसलसल चलती है, ये भी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। नाउ the first mobile phone is also of good quality, the second mobile phone is also of the good quality. दोनों की क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन है क्योंकि दोनों ही अपनी स्पेसिफिकेशन को भी मीट कर रहे हैं और अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहे हैं, जो कि क्वालिटी की डेफिनेशन है। However, there comes the grade. जो पहले वाला मोबाइल है वो लो ग्रेड है और जो दूसरे वाला मोबाइल है वो हाई ग्रेड है। Now there should be, this concept should be very much clear to you people, the difference between the quality and the grade. So usually people are not able to differentiate between the grade and quality, and they use these terms interchangeably, but there is a wide and very clear difference between the definition of both. So I hope you can understand now the definition of the quality and that of the grade. Now we move to the reasons for poor value. Why the poor value is imparted in any product, process or system. So to improve any value in a system, you have to identify what are the probable reasons of the poor value. So these may be identified as the list is given over there, and
first of all is the lack of information. So lack of information and آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا یا نالج نہیں ہے اور آپ ایک ہی طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں اور وہ آپ اس طریقے سے کام کیے ہی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی امپروومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو اس کی بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ ایک ایسے لوکیلٹی میں اگر چلے جائیں جہاں کے لوگ باہر کی دنیا سے زیادہ فیملیئر نہیں ہوں تو ان کا جو زندگی ہے وہ زیادہ ٹف ہوگی. اور کیونکہ وہ اگر باہر کھانا بنانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے ایک دیا جلائی اور جو آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے تو آپ اس میں کرتے ہیں اور آپ کا چولہا جل جاتا ہے. دوسری ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں کہ گیس کا کنسیپٹ شاید نہ ہو تو وہاں کیا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جائیں گے جنگل سے یا کسی جگہ سے لکڑیاں کاٹ کے لائیں گے اور پھر وہ لکڑیاں جلائی جائیں گی اور اس میں پھر کھانا بنایا جائے گا. سو لیک آف انفارمیشن از ایکچولی کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ. آپ کی ایفرٹس بڑھا دیتی ہے, آپ کی کاسٹ بڑھا دیتی ہے. اور جب اگر کوئی سسٹم اس طرح کا آ جائے جو چیزوں کو امپروو کر سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری مشین ہی نہیں لے کر کے آئیں, ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹ آپ کا جو ہے اگر آپ اس کو ریپلیس کر دیں تو آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے. سو ون آف دا ویری بگ ریزن فار پور ویلیو از لیک آف انفارمیشن. رانگ بلیفس. بہت سارے لوگوں کی چیزوں کے بارے میں کنسیپٹ یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم چیز کر رہے ہیں وہی بہترین طریقہ ہے اور وہ دے کیپ ڈوئنگ دیٹ اسٹف. سو بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح آپ کی ایک سلائی مشین بنی. تو جن صاحب نے وہ سلائی مشین بنائی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے وہ سلائی مشین نہیں بن رہی تھی جو کپڑے سینے کے لیے کی جاتی ہے. اور ٹل دا ٹائم کہ وہ سو گئے اور خواب کے اندر انہوں نے خواب دیکھا کہ کس طرح وہ جنگلی وحشیوں کے ہاتھ آگے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ سلائی مشین بنا دو نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا جو بھی ان کا پروسیجر تھا. اب یہ صاحب مشین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ مشین نہیں بنتی. جب وہ ٹائم فریم جو انہوں نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ بھاگ پڑتے ہیں اور جب یہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو وحشی ہیں انہوں نے نیزے پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے نیزوں کی جو آگے ٹپ ہوتی ہے وہاں سوراخ ہے. سو یہ اٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو بھی سلائی مشین بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کے جو سوئی ہے اس کے دم کے اندر داغا جو ہے وہ ڈال رہا ہوں. تو اب ان کے لاشعور نے ان کو کہا یا اشارہ کیا کہ ساری مشین آپ نے ریوزٹ کتنی دفعہ کر لی ہے, سوئی کو آپ نے ریوزٹ نہیں کیا, تو سوئی کی ٹپ کے اندر دھاگا ڈال کے بھی ٹرائی کر لیں. سو آج سلائی مشین آپ کے سامنے ہے. انیشلی جو سوئی تھی وہ اس کی دم میں ہی, ابھی بھی اگر آپ سنگل ایک سوئی لے لیں تو اس کی دم میں ہی دھاگا ڈالتے ہیں, لیکن اگر آپ سلائی مشین دیکھ لیں تو اس کی ٹپ کے اندر جو ہے وہ دھاگا ڈالا جاتا. تو یہ جو صاحب تھے جو آج سے 500 سال پہلے یا 600 سال پہلے تھے, ان کا ایک بلیف تھا کہ میری جو سوئی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ سوئی اوور دا ایئرز اسی طرح اس کی دم میں ہی دھاگا ڈال کے ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. سو جب انہوں نے اپنے اس بلیف سے باہر نکلے تو he was actually able to invent a new machine. رسک آف پرسنل لاس, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ پور ویلیو اس لیے کر جاتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایک جو چیز نہیں ہوتی وہ لوگوں کو نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بتا دی بات اور کل کو اس طرح نہ ہوا تو پھر جو ہے مجھے لوگ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. بہت سارے ڈیسیژنز جو ہیں جو ہمارے بہت ٹاپ لیول پہ لے لیے جانے چاہیے وہ اس لیے نہیں لیے جاتے ہیں کہ ہم کل کو اگر وہ اس طرح نہ ہوا تو ہم کیا رسپانس کیا ہوگا ہمارا. بریو ڈیسیژنز جسے کہتے ہیں وہ نہیں لیے جاتے. میں کمپنی کے اندر ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, میں اس لیے چپ رہوں کہ اگر مثال ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے اس بات کرنے سے, یا اگر میری جو دی ہوئی ایڈوائس ہے وہ ایپلیکیبل نہ ہو سکی تو میری کافی زیادہ انسلٹ ہوگی. تو یہ چیز جو ہے آپ کو الٹیمیٹلی آپ کے پور ویلیو کا ریزن بن جاتی ہے.
एक और बड़ी चीज़ है कि आप रिलक्टेंस है आपके अंदर कि आप एडवाइसिंग जो है वो नहीं करते हैं या एडवाइजिंग नहीं लेते हैं। आप ये कहते हैं कि अगर मैंने एडवाइस ली तो मेरे जो सीनियर्स हैं वो ये कहेंगे ये तो हमारे पास आ जाता है हर डिसीजन करवाने के लिए, या मेरे पास आ जाती है हर डिसीजन करवाने के लिए, तो इसलिए फिर लोग रिलक्टेंस जब शो करते हैं एडवाइस के लिए तो वो एक अच्छी वैल्यू इम्पार्ट नहीं कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, वो इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जी शॉर्टेज ऑफ टाइम, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं टाइम जो है वो सबसे कीमती कमोडिटी बन चुका है और हम हर काम जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो ड्यू कोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एक्शन है वो मिस हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड, ये स्टेक होल्डर्स का भी हो सकता है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का हो सकता है। और चेंजिंग टेक्नोलॉजी, आपकी इतनी जल्दी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है जिसकी वजह से आप का जो वैल्यू है वो पुअर होने का होता है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रिक्वायरमेंट्स, नाउ ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक रिक्वायरमेंट्स बना लेते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमें बस यही चाहिए, हमें ये कुर्सी ही चाहिए और इसी तरह की चाहिए, इसी स्पेसिफिकेशन की चाहिए, या हमें वो जो फैन है लोहे का ही चाहिए, दैट्स इट, तो बेसिकली आप फिर पुअर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। एंड पुअर ह्यूमन रिलेशंस, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ह्यूमन रिलेशंस आर very much of the essence. So function differentiates the value engineering initiative from other cost reduction techniques. This is the only difference between the cost reduction techniques and value engineering. So if somebody is saying that value engineering is a cost reduction technique, his or her answer or her quotation is not the right one. Value engineering is for good thing than of cost reducing technique. So as we have talked about the 5 options we can have to improve the value while we were discussing this formula, और एक उसमें ये था कि हम फंक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट सेम रहे, फिर हम फंक्शन सेम रहे और कॉस्ट को रिड्यूस करें, फिर हम फंक्शन को बढ़ाएं और कॉस्ट भी कम हो जाए, और फिर हमने ये कहा था कि फंक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और कॉस्ट कम तेज़ी से बढ़े, और फिर हमने ये कहा था कि फंक्शन भी कम हो और कॉस्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कम हो। तो हमने कहा था जो 5वीं ऑप्शन है जो हमने लास्ट में गिनवाई कि फंक्शन भी कम हो, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो सी दिस इज द सेंस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक जो कि मिसिंग है कॉस्ट रिडक्शन में, और ये सिर्फ वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर ही ये सेंस है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? फंक्शन, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फॉर सम पर्पस, so this purpose is termed as a function. In this technique, function can be evolved by asking certain questions like what is it and what does it do? ये क्या चीज है और ये क्या करती है? So in value engineering there is a unique way to define a function. It has to be defined with only 2 words, a verb and a noun. The working function is defined by an active verb and a measurable noun, and a selling function is defined by a passive verb and a measurable noun. So there are buzzwords, active verb, now this is very important, and measurable noun. जो भी noun होगा वो measurable होना चाहिए, और selling function is defined as passive verb and measurable noun. It has been observed that if there is a clarity about the function and the item and the purpose, there is no problem in defining the function in just 2 words. Moreover, it eliminates ambiguity, which is an essential requirement in a team approach. So we actually go through the one of the example. So in a function analysis session of value engineering, the purpose of ceiling fan was asked, and one participant said provide comfort, and the other participant said circulate air. After deliberation among the participants, it was decided that the accepted answer was circulate air. Circulate is an active verb, whereas provide is a passive kind of passive verb and does not indicate any specific action.
Hence, always avoid using the verb provide as a rule. So the term circulate is more acceptable choice. Air is again measurable noun. आपने सुना होगा 1 टन का AC है, 2 टन का AC है. Now ton is that depicts the volume, and 1 ton mean 1 ton compressed air. So air can be measured. Hence whereas comfort cannot be measured. आप क्या कोई definition कोई कुछ नहीं है कि कितने units के आपकी comfort है, 4 unit 5 unit comfort को अभी तक आप measure नहीं कर सकते हैं to this date. Hence air was acceptable as the class. So circulate air was chosen. So now we again repeat the function should be expressed in 2 words, and that is active verb and measurable noun. So the level of functions, there are 2 levels of functions. They are basic functions and secondary functions. The basic function is that function for which the item is created, whereas a secondary function comes into being because of the particular choice of the design. To identify a basic function, if you remove that function, the item will cease to exist. But in case of secondary function, even if you eliminate that function, the item will continue to exist. So the very good example of this is the mobile phone. So the basic function is कि आप उसकी call receive करें और call करें या messages करें या messages receive करें. और अगर आप इसके अंदर से जो कॉल करने वाला है फंक्शन, और इसके अलावा इसके आपके काफ़ी सारे फंक्शंस हो सकते हैं, आपकी ऐप्स हो सकती हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं और आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसके अंदर से आप कॉल की ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं, नाउ दिस वोंट रिमेन बी अ मोबाइल फ़ोन. वो पेजर हो सकता है, वो आपका हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन कहना फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. अगर आप उसके अंदर से ऐप्स की ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं या इंटरनेट की ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं या कोई एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन आपके मोबाइल का जो फंक्शन है, जो आपका कॉल का फंक्शन है वो रहता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी और उसको आप मोबाइल फ़ोन ही कहेंगे. सो आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं 1.5 लाख रुपए का और एक आप लेते हैं 1,500 रुपए का, दोनों ही मोबाइल फ़ोन होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो बेसिक फंक्शन है वो बिल्कुल प्रिवेल करता. So while defining a function, one should be very clear of the context and what the item is being used for, because based on its purpose. The definition may change. As an example, the function of a piece of wire when used for an electric connection is to conduct current. Current can be measured in amperes, and conduct is carrying out the current. But the same wire when used to move a material is its function will be the transfer force. You are actually holding this and you are moving it, so you are actually transferring the force. And the function will be defined as fasten components when the wire is used to keep the components together. और अगर आप एक लकड़ियों का गट्ठा बांध रहे हैं उसी केबल के साथ, अब केबल वही है लेकिन उसके फंक्शन जो हैं वो विद द यूजेज डिफरेंट हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसको डिफाइन भी फिर डिफरेंटली ही करेंगे. सो एक ही मटेरियल है और आप उसको डिफरेंट काम के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो या प्राइमरी आपका फंक्शन है वो आप चेंज कर रहे हैं, तो उसको डेफिनेशन उसकी डिफरेंट हो रही है. Now we have talked about the value, the function, and then third part is, and very important part is the cost. Usually cost consists of 3 elements, and they are direct material cost, direct labor cost, and overhead cost. Direct material cost, it is the material which goes into the product, process, service or system. The method of identification of this element of the cost is that it should have direct relation with the unit. For example, for 1 unit it requires X quantity of the material. Then for 2 units the quantity must be 2x. अगर आप एक घर बना रहे हैं और 5 मरला घर के अंदर अगर हम अज्यूम करते हैं कि 2 घर हैं और दोनों का डिज़ाइन सेम है, तो अगर एक घर के अंदर ईंटें लगेगी 100,
तो दूसरे घर के अंदर भी ईंटें लगेगी 100। ये नहीं हो सकता कि आपका एक घर तो 100 ईंटें लगें और जब आप 2 घर बनाएं तो 150 ईंटें लगें, और अगर आप 3 घर बनाएं तो आपके 200 ईंटें लगे। तो बेसिकली जितनी ईंटें एक घर में लगती हैं उतनी ही दूसरे में लगती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो है डिजाइन सेम है, और प्रोवाइडेड दैट कि आपकी वेस्टेज को हम अभी एलिमिनेट कर रहे हैं। Direct labor cost, like the logic mentioned in direct material cost, direct labor cost is the cost which can be directly attributed to the item. That is, if one unit requires 1 hour, then 2 units should take 2 hours. Now this concept is अगर हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के हवाले से कि जो प्रोडक्टिविटी है सुबह के टाइम वो शाम को नहीं होती, या अगर आपके कम जो चीज़ें बनती हैं वो बेसिकली उनकी तो कीमत ज़्यादा होती है, और जब आप ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं तो उसकी कीमत तो कम होना शुरू हो जाती है। बट दिस कंसेप्ट विल बी डिस्कस्ड, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो लेबर की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, वो आपकी ज़्यादा ये कम होने से बढ़ती या कम नहीं होती। वो बेसिकली आपका उतना ही मटेरियल आपको चाहिए जितना, अगर एक कुर्सी के अंदर आपकी 10 kg का लकड़ी लगी है तो दूसरी कुर्सी में अगर 2 कुर्सी हैं तो 20 kg हो जाएगा, और अगर 3 हैं तो वो 30 kg हो जाएगा, और 4 हैं तो वो 40 kg हो जाएगा। Then comes this part, variable part, and that is overhead cost. The cost element which cannot be directly associated with the product, process, service or system are considered as overhead. Usually the overhead is divided into production overhead, administrative overhead, selling and distribution overheads. In order to use the cost for future decision making, marginal cost came into being. Marginal cost is not a method of costing, it is a technique. As per this technique, overhead costs are divided into variable overheads, semi-variable overheads and fixed overheads. और इसमें यह है कि आपका जो overheads ऐसे जो कि आपके with increasing the production नहीं बढ़ते या कम होते। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा ली तो वो नहीं बढ़ेंगे, और अगर आपने प्रोडक्शन कम कर दी तो वो कम नहीं होंगे। वो बेसिकली आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप एक फैक्ट्री बनाते हैं जिसमें स्टील बनेगा, तो वो जो फैक्ट्री का जगह है या जो फैक्ट्री की आपकी एस्टेब्लिशमेंट है और जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें हैं, वो बेसिकली सारे के सारी जो उसकी कॉस्ट होगी दैट विल रिमेन फिक्स्ड, कि चाहे आप वहाँ कुछ स्टील बनाएं या ना बनाएं, वो जो आपको एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है या जो रेंट है आपको उस जगह का वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, अगर आप एक ऐसी मतलब इसी स्टील वाली की मिसाल ले लें, अगर आप जब आप स्टील बनाते हैं तो आप लेबर हायर करते हैं, और अगर आप 1 टन के लिए 2 बंदे लेके आते हैं, और अगर आप 4 टन कर लेते हैं तो फिर आपको 5 बंदे चाहिए, और अगर आप 6 टन कर लेते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आपको बंदे ज़्यादा चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर ही अब आपकी बेसिकली जो है वेरी करेगी ये चीज़ कि आपकी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर कम है तो फिर इसकी कॉस्ट कम होगी। सो दिस इज अबाउट ओवरहेड कॉस्ट। Those overheads which have direct relation with the volume of the production are variable, and those which are not are called fixed. So there is an example given for that. The fixed cost is 10,000. The variable cost is 10 rupees per unit. At the production level of 10,000, the fixed cost per unit is rupees 1, and the product cost will rupees 11. If the production increases to 20,000 units, while the variable cost remains at rupees 10, the fixed cost per unit will be rupees 0.5, and the product cost will reduce to 10.5. So this is an example of overhead cost. And then we were talking about the life cycle cost. The life cycle cost, which is known as cradle to grave cost, is the total cost from acquisition of an item to the final disposal of the same after the life of the item. The elements of the life cycle cost can be narrated as acquisition cost, project cost, operational cost, maintenance cost, repair and replacement or upgradation cost, and salvage cost. So these are 5 elements which are part of life cycle cost.
Okay, so this is it, and we had discussed today about the value engineering history and background, the value engineering analysis concept and definition, the definition of value, concept of value, value type, then mathematical expression of value, reasons for poor value, and then we had this function, the purpose for which anything is created is function, then level of functions, primary function, basic function, and secondary function, then costs, direct labor cost, direct material cost, and variable costs, overhead cost, fixed cost, and life cycle cost. So there are 5 elements of life cycle costing we do consider. So this is it, and we close our lecture with this end note. Everything that can go wrong will go wrong if you are not applying some corrective actions. So this is a very good quotation. So I hope we have understood the lecture, and I say goodbye and good luck and Allah Hafiz. Thank you.